So good afternoon everyone. In this video, I am going to discuss about some important points related to design of animal experimentations. As in earlier videos, we have discussed about how to construct a animal house facilities, how to get a registration number, what is required in the animal house facility as per CPCSA guidelines, and how to construct a institutional animal ethics committee, what is its functions, what is the institutional biosafety committee. Today in this lectures, I am going to discuss about some of the important points when you are designing any animal experimentation. So first thing is animals. You should, if you have asked in your protocol, you are going to use a rat. Then question would be why you would like to use the rat? Why not mice? Why not rabbit? Why not mena pig? So you should have a proper explanation. Due to these reasons, we want to use this particular type of animals. Then in rat, which strain of the rat you would like to use, or which strain of mice you would like to use. So suppose you have written you are going to use a bulb C mice, then question would be why you would like to use bulb C mice for your experiments. So you should give the explanations as per the literatures. If you have made any explanation, yes, due to because bulb C mice are suitable species of mice which we are using particularly to study the immunological effects, and we in our protocol we want to check the immunological effect of this XYZ molecule. So what I mean, you should give the proper justifications why you would like to use this animal, why this particular species of the animals. Then next questions, next information you have to be write how many numbers of animals you are going to use in your protocol. So it depends upon your protocol and as per statistical significance, minimum 5 animals you have to be used per group. But in most of the protocols, maybe you all have seen, we are keeping 6 animals, 1 animal extra. The reason is maybe during the experimentation something is happened, so your protocols will not be violated, your protocol will not be hampered. So 1 extra animals you can keep in each group in that scenarios. But in some cases, investigator asked 10 animals per group also, and ethics committee approved that 10 animals per group also in many protocols. The question is if your investigator, principal investigator, is able to justify why they want 10 animals per group. So your ethics committee will approve 10 animals per group also, particularly in neurological experimentations. If you would, we would like to check the behavioral assessments of the animal. So in small, in 6 or 5 or 6 animals, there you will get huge number of deviations. So in that type of experiments, you can ask the ethics committee with proper justifications to use these 10 animals per group. In some cases also you can take much more number of animals per group if you are able to justify the ethics committee that whatever the chemical we are using or whatever the procedure we are using in the animals, there are a lot of chances of mortality. So that's why to cope with, because if you have approved 5 or 6 animals, so there is a chances of 3 maybe die, so your protocol will be hampered. So in that cases also ethics committee will approve. So the overall conclusion is if you have a proper justifications for the number of animals, your animal will approve. It's not like that you will get only 6 animals per group, or if you don't have any justification, then your 6 animals will also not approve. So depending upon that one, and suppose you have finalized the animals, you are saying yes, this particular species we want, and these to conduct this protocol we want 36 animals. I am just giving a one hypothetical example. Then next informations you have to include which drugs you are going to use in animals, which chemical you are going to use, and in which solvent you are going to dissolve that chemicals. See, corrosive chemicals are strictly prohibited to administered in animals. So you have to be understands which vehicles are approved by the CPCSA in which you can dissolve that your drug molecules, and then you can administer it into animals. The next question would be which route of administrations you are going to use, whether you will give orally, IP, IM, or other routes.
and how much volume you are going to administer in the animal. As maybe all of you knows, depending upon the route of administrations, your volume will be vary. So you have to be make answer, yes, we are going to use this route, and through this route we want to give that much volume. And next questions maybe might will ask how frequently you are going to give this particular chemical, means on a daily basis or per week or per month. So you have to mention about the durations of your administrations of particular chemical in animals also, means how long you are going to give that particular chemicals, for 1 month, 2 months, 6 months, or 8 months. So durations of experiments you have to be mentioned, and during and after completion of experimentations what you are going to do. So after completion of experiments, whether you are going to just to collect the blood and to do the that bio availability, to check the viability of molecules, or to just check the effect of your molecule on the blood parameters. So whether there is a need to sacrifice the animals at the end of the experimentations or in between the experimentations. So if you are going to sacrifice, then how you are going to dispose that animals. If you are not going to sacrifice the animals, then how you are going to rehabilitate the animals. It's not like that you have conducted the experimentation and after completion of experimentation you have just collected the blood and leave the animals. No, you have to be rehabilitate the animals. So you have to understand how to rehabilitate. You have to provide that information also, and what care during and after experimentation you are going to provide to the animal. So these are the all of the some of the important points when you are designing a protocol. If I explain little bit in Hindi, so एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहला क्या है कि आप ये सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा एनिमल चाहिए आपको, और वो एनिमल सपोज आपने बोला हमें रैट चाहिए, तो रैट क्यों चाहिए, माइस क्यों नहीं चाहिए? तो आपके पास एक रीजन होना चाहिए कि इस वजह से हमें हमारे इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए रैट इज यू कैन, आप सपोर्ट दे सकते हो लिटरेचर का कि ये सब स्टडी के लिए रैट यूज हुए हैं और सबसे यूज मीन्स प्रेफर्ड ये है, तो इस वजह से हम यूज करना चाहते हैं। माइस में हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें हम इतना अमाउंट ब्लड नहीं ले सकते और हमें इतना लेना है, हमें रैट चाहिए, मतलब आपके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि रैट में भी कौन सी स्पीसीज चाहिए आपको, विस्टर रैट चाहिए, एसटी रैट चाहिए, कौन से चाहिए? तो देर आर सो मेनी स्पीसीज। सो आपने बोला मुझे विस्टर रैट चाहिए, तो क्यों चाहिए विस्टर रैट, उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, देनी पड़ेगी कि हमें इस रीजन से चाहिए, और आप उसको सपोर्ट कर सकते हो लिटरेचर के साथ। फिर दूसरा पॉइंट जो आपको एड्रेस करना होता है अपने एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन में कि कितने नंबर, कितने एनिमल चाहिए आपको, एक ग्रुप में कितने चाहिए, कितने ग्रुप हैं आपके, और एक ग्रुप में कितने एनिमल चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली 5 एनिमल हमें मिनिमम चाहिए होते हैं पर ग्रुप। पर आपने बहुत सारे प्रोटोकॉल में देखा होगा 6 एनिमल हम रखते हैं, तो एक हम एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि कई बार ड्यूरिंग जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कुछ मीन्स प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हो गई एनिमल्स की, तो अगर डेथ हो गई तो हमारा तो प्रोटोकॉल ही खराब हो जाएगा पूरी तरह से। तो वो सब करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा एनिमल रखते हैं। पर ये भी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल की आपको 6 एनिमल ही अप्रूव होंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि नहीं मुझे 10 एनिमल चाहिए एक ग्रुप में, तो आपकी एथिक्स कमेटी अप्रूव करती है, बट विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ठीक है हमें न्यूरोलॉजिकल की एक्सपेरिमेंट बिहेवियरल असेसमेंट करनी है, तो अगर हम 6 एनिमल लेंगे तो इसमें हमारी वेरिएशन काफी ज्यादा आएगी, तो मतलब आपको एक जस्टिफाइड रीजन देने पड़ेंगे। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल, या आप सर्जरी कर रहे हो कोई, तो बोला कि सर्जरी में चांसेस हैं कि डेथ हो सकती है एनिमल्स की, तो हमें पहले ही एक्स्ट्रा एनिमल्स चाहिए। तो आपको नंबर जस्टिफाई करना है, कौन सी ड्रग देनी है आपको, कौन से केमिकल्स देने हैं, वो उसके नाम लिखना पड़ेंगे आपको। और इन ड्रग्स और केमिकल को क्योंकि आप ऐसे तो नहीं देंगे एनिमल्स को, तो आप किसी चीज में उसको डिजोल्व करोगे, तो वो जो व्हीकल होगा वो कौन सा करोगे, इरिटेंट नहीं होना चाहिए, सीपीसीएससी के आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अप्रूव्ड व्हीकल में देना है। अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो आप अगर डीएमएसओ यूज कर रहे हैं तो डीएमएसओ ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पर ये नहीं डीएमएसओ आपने 100% यूज कर लिया, तो डीएमएसओ की कितनी परसेंटेज यूज करनी है, कैसे डाइल्यूट करना है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कितना वॉल्यूम दोगे आप, तो वॉल्यूम जो है वो आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वेरी करता है। आईवी के थ्रू आप सबसे ज्यादा वॉल्यूम दे सकते हो,
फिर आप ओरल दे लो, आईपी, आईएम, तो आपके जो भी रूट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही वॉल्यूम आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आईएम रखा है और आपने बोला हम 5 ml दे देंगे माइस में, तो आपकी एथिक्स कमेटी कभी अप्रूव नहीं करेगी, और उससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि आपको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है एनिमल्स की। फिर दूसरा ये रहता है कि आप कितने टाइम के लिए दोगे, दिन में कितनी बार दोगे। तो आपने बोला कि हमें सुबह भी देना है, शाम को भी देना है, और फिर बोलेंगे कितने दिनों के लिए इस तरह से दोगे, तो आपने बोला कि मुझे तो 30 दिन के लिए देना है, 1 महीने के लिए। और बीच में कई प्रोटोकॉल ऐसे भी होते हैं कि शुरू में आप कुछ और चीज का एक्सपोजर कर रहे हो, फिर 15 दिन बाद आप किसी और का, तो आपको ये क्लियरली मेंशन करना, 15 दिन हम ये देंगे, 15 दिन हम ये कर देंगे, और ये इफेक्ट देखेंगे, प्रोटेक्टिव देखेंगे, जो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट होता है कि चलो अब आपका एक्सपेरिमेंट, अच्छा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आप क्या करोगे। आपने बोला कि हम डेली उसका वेट लेंगे, डेली हम ये करेंगे, डेली हम ये रिकॉर्ड करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको एडमिनिस्टर मेंशन करनी पड़ेगी। और जब आपका प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया तो क्या करोगे। कंप्लीट होने के बाद आपने बोला कि हमें तो हमारा प्रोटोकॉल सिर्फ इतना है कि हमारा काम खत्म, तो हमने सिर्फ ब्लड लेना है, ब्लड में हम देख लेंगे पैरामीटर्स या ड्रग की कंसंट्रेशन देख लेंगे बस। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर क्योंकि आप सेक्रीफाई नहीं कर रहे हो एनिमल, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप रिहेबिलिटेट कैसे करोगे। ऐसा नहीं कि आपका एक्सपेरिमेंट खत्म तो आप बस एनिमल को छोड़ दो, आप रिहेबिलिटेट कैसे करोगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड। अगर आप सेक्रीफाई कर रहे हो तो सेक्रीफाई किस मेथड से करोगे, क्यों करोगे, उस मेथड का यूज वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर सेक्रीफाई करने के बाद आप डिस्पोज कैसे करोगे एनिमल्स को, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। और केयर क्या करोगे, अगर आपके एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आपकी कोई सर्जरी है या कुछ भी है तो आपकी केयर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ये अगर आपने क्लियर कर लिए फॉर्म बी में, और इनके आंसर आपके पास सबके हैं, तो you will not get any problem to get a approval of animal experimentation from ethics committee. Uh, so I hope you people all will understand about these. Thank you very much.